So let's understand what happened on today's session and what is there for tomorrow's session. Now, this time in a complete different way. यहाँ पे I will be using three different indicator. So each indicator involves different methodology, different strategy. So 1, 2, and 3. Three different indicators, three different strategies. यहाँ पे all my decisions which I am trying to plan, which I am trying to make is purely depends on the indicator. Based on the indicator reference level, I am trying to react. So first one is the adaptive support and resistance. Second one is the live support and resistance, that is volatility based support and resistance. Third is the prop levels. Okay. यहाँ पे make sure watch this video fully so you'll understand more in a better way. Two stages will be going on. Stage one, how the market has reacted based on each individual strategy. And number two, what are the key reference level or what are all the key things which I'll be looking forward for the next trading day. Okay. So now before beginning, access for the indicators simple. Just you can see the description. You will find my WhatsApp number. I will also add the WhatsApp number in the screen on the bottom of the video. Just message me on the WhatsApp so I can give you the free access. I repeat, I will give you the free access plus videos on how to use it. Everything details will be shared with you of all the three indicators directly to you on WhatsApp. From there, you can proceed further. So now let's first begin with one by one. I'll start with the prop levels, the indicator by the name prop levels. Okay. So what and how? यहाँ पे you can see this is 10th session, 10th December. यहाँ पे there are lines over here, lines over here, lines over here. So don't get confused. Okay. I'll just show you stage by stage. यहाँ पे छोटा सा एक replay I'll go forward ताकि आपको भी clarity के साथ पता you can identify कि really what is going on in the market. Market most traders का problem market ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है. You traders are more focused on कि यहाँ पे क्या candle form हो रहा है, what candle is forming here, engulfing, bullish engulfing, bearish engulfing, bullish rejection, bearish rejection. इसी पे आप you are stuck. इससे बाहर आना पड़ेगा. That is the core concept. And the point here is जो कुछ भी indicators है ये कोई randomly तुक्केबाजी वाला indicators नहीं है. First point number one. It is more than my 8 to 9 years of experience. I have summarized and made it easy for you in form of an indicator. तो अब I will show you a replay, complete process आपको replay में I will show you probably आज के session. For example, before market open. Okay. This is the fresh action here, आज के session market activity. So what are all the things I'm trying to keenly focus? यहाँ पे आपको ये चीज focus करना पड़ेगा. यहाँ पे we have multiple reference level here. This is developing. This is currently going on. Market जैसे ही खुल जाएगा, this will continue to develop. Once I start replay, आपको पता चल जाएगा. Okay. Other than that, यहाँ पे notice है, this is a reference level which is untested. अभी तक टेस्ट नहीं हुआ. यहाँ जैसे ही खत्म हुआ, new levels has been started. This has not been tested. Number two, and this is number three. These three levels has not got tested for this session. तो ये मेरे लिए तीन important reference level only as per the indicator, the prop level indicator. ओके सिर्फ इसी इंडिकेटर के साथ में यही स्ट्रेटजी के साथ आई एम गोइंग फॉरवर्ड. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कोई एक इंडिकेटर और एक इंडिकेटर को मिक्स नहीं करूंगा. आई विल नेवर डू इट. बी क्लियर. ईच एज इट्स ओन एडवांटेज, ईच एज इट्स ओन वे ऑफ लुकिंग मार्केट, अंडरस्टैंडिंग मार्केट. मतलब यहाँ पे जो भी इंडिकेटर है ये प्योरली डिपेंड ऑन प्राइस. There is no lagging, कोई lagging वैगिंग कुछ नहीं है. प्योरली डिपेंड ऑन प्राइस. जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है ये लेवल उसी के हिसाब से. मतलब यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर, यहाँ पे मैं अभी इस इंडिकेटर में 2 स्टेज है, अभी ये डेवलप हो चुका है. दिस विल नॉट मूव. ये लेवल रुकेगा नहीं. इट विल नॉट मूव.
दिस इज डेवलपिंग, जब तक ये नेक्स्ट नया फॉर्म नहीं हो रहा है, दिस इज डेवलपिंग। प्राइस जैसे ही ओपन होके रिएक्ट करेगा, इट विल स्टार्ट कंटिन्यू टू चेंज, फ्लक्चुएट होता रहेगा। सो आई एम स्ट्रेट अवे मार्किंग, यही प्रोसेस एवरी सेशन में फॉलो करूंगा, बिकॉज एज एनी अदर वीडियो इफ आई डू ना, आई विल स्ट्रेट अवे जस्ट शो यू द लेवल्स, मार्क करके सीधा आई विल गो फॉरवर्ड। ओके, तो ये हो गया 1 2 and 3. These are the three reference level which is untested, अभी टेस्ट नहीं हुआ क्लियरली, तो यही मैं कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा हूं। एंड गोइंग फॉरवर्ड दीज आर डेवलपिंग, ये अभी डेवलप हो रहा है इसीलिए नहीं, एंड द नेक्स्ट रेफरेंस लेवल हियर इन द बॉटम। ओके, ये हो गया पॉइंट नंबर 1 ऑन द प्रॉब लेवल इंडिकेटर। यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है राइट, ग्रीन रेड ऐसा कुछ दिख रहा है, व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन ना, ये आपको दिखा रहा है कि व्हाट इज द करंट, जो भी करंट प्राइस एक्शन चल रहा है उसमें कौन ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डी, आई जस्ट प्ले द बार। ओके, यहाँ पे आप जस्ट नोटिस कीजिए प्राइस अप डाउन फ्लक्चुएट कर रहा है, आई एम नॉट रिएक्टिंग। ये जैसे ही प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है ना, आई एम नॉट इन एन अर्जेंट टू रिएक्ट। ओके, यहाँ पे आप कोई भी रेफरेंस लेवल है नोट कीजिए क्या प्राइस एक्शन चल रहा है। तो अभी तक आप जैसे आप यू जस्ट ट्राई टू सी द प्राइस एक्शन सो फार कि व्हाट हैज डेवलप। यहाँ पे एक बार के लिए मैं लेवल्स को रिमूव भी कर देता हूं सो मेक यू मोर क्लियर। एंड फॉर द इंफॉर्मेशन, you could see the red color line is more darker compared to the blue color line. Why? अब ये ब्लू कलर जो भी रेफरेंस लेवल है, दिस इज गिविंग इंफॉर्मेशन, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट इज गिविंग मी इंफॉर्मेशन एंड इट इज गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट, इसका काम यही है। टू मेन वर्क ऑफ हियर इज इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। अब जैसे ही मार्केट खुलने से पहले यहाँ पे कुछ था, द जोन्स वर समवेयर हियर राइट, जैसे मार्केट खुला 2 3 कैंडल्स न्यू लेवल स्टार्टेड डेवलपिंग। अब इसके साथ क्या इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लेवल्स नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इट इज शिफ्टिंग अप, अगेन इट इज शिफ्टिंग डाउन। चलो बढ़िया, प्राइस से प्राइस इज शिफ्टिंग अप वेयर इट इज अप्रोचिंग, मतलब प्राइस शिफ्ट हो रहा है तो मोमेंटम अपसाइड पे है, मतलब एक्टिविटी इम्बैलेंस, बुल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। I don't know how many traders have understanding knowledge about balance, imbalance. Well, if you had watched my old videos or attended any of my webinar, you will know it. आपको पता भी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, you will get to know. बट इसके लिए बोलता हूँ ना, वीडियो देख रहे हो तो पूरा स्ट्रेच देख लीजिए, समझ आ जाएगा। यहाँ पे वेयर इट इज अप्रोचिंग, ये अनटेस्टेड लेवल पे प्राइस अप्रोच कर रहा है, दिस इज द ब्लू लाइन, यहाँ पे भी अनटेस्टेड है, दिस इज ऑल्सो अनटेस्टेड। अभी आज ही टेस्ट हुआ था, ये पूरा दिन कंटिन्यू होगा, फुल डे आई विल कंटिन्यू टू यूज इट। यहाँ पे नोटिस कीजिए प्राइस इज अराउंड रेफरेंस लेवल, व्हाट इज हैपनिंग, प्राइस ऊपर जा रहा है फिर से इमीडिएटली गेटिंग रिजेक्टेड, मतलब ये एकदम से प्राइस नीचे आ रही है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जब प्राइस एक लेवल यहाँ पे जो रेड रेड कलर लाइन इसके ऊपर ट्रेड ही नहीं करेगा, तो हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग टू मूव अप, इसका मतलब क्या है, बियर्स थोड़ा वीक हो रहे हैं, बियर्स आर गेटिंग माइल्ड वीकर राइट, एंड आई विल प्ले इट। जस्ट नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या हो रही है, प्राइस जस्ट क्लोजली नोटिस, यहाँ पे इंट मिल गया, बियर्स वीक हो रहे हैं, डिस्पाइट लेवल शिफ्टिंग अप, प्राइस नहीं कर रहा है मोमेंटम, मतलब ये डेवलपिंग जो भी लेवल है इट इज शिफ्टिंग अप, सही है बढ़िया, बट लेवल शिफ्ट होने से मार्केट ऊपर चला जाएगा नहीं। प्राइस का एक्शन क्या है, एट रेफरेंस लेवल प्राइस स्ट्रगल कर रहा है टू एक्शन अबव राइट, ये बियर्स का एक्टिविटी, बुल्स वीकनेस। उसके बाद क्या हो रही है, प्राइस ट्राइंग टू कम डाउन, पुल बैक, रिजेक्ट करो, तो ये ही रिजेक्शन ऑलरेडी बियर्स कंट्रोल लेने की कोशिश, या फिर ऑन ऑपोजिट साइड बुल्स वीकर है, यहां से ही प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, तो ये मेरा एग्जीक्यूशन है, अबाउट दिस इज माय स्टॉप लॉस, स्ट्रैटेजी के हिसाब से आई एम डूइंग दिस। अब टारगेट क्या है, द मैटर ऑफ फैक्ट हियर इज, यहाँ पे भी एक रेफरेंस लेवल है एंड यहाँ पे भी एक रेफरेंस लेवल, तो ये ब्लू कलर रेफरेंस लेवल और दिस रेड कलर लाइन विच इज देयर, कोई भी रेफरेंस लेवल है, ओनली थिंग आई एम चेकिंग, ओनली थिंग आई एम चेकिंग हियर इज व्हेन प्राइस अप्रोचिंग दिस लेवल, वेदर इट इज बीन इजीली क्रॉस्ड या फिर स्ट्रगल कर रहा है, एक दो कैंडल स्ट्रगल कर रहा है तो इमीडिएटली आई विल बी कमिंग आउट। यहाँ पे क्या हो रही है, प्राइस जैसे ही वो क्रॉस कर रहा है, इजीली क्रॉस करके जा रहा है, तो ये मेरे लिए कौन क्या टारगेट है,
नेक्स्ट रेफरेंस लेवल, ये जो भी रेड लाइन दिख रहा है ना, दिस इज माई टारगेट, यही मेरा टारगेट है। ब्लू लाइन मैक्सिमम केस में आई टेक इंफॉर्मेशन एंड आई ओनली चेक कि व्हेन प्राइस इज अराउंड इट द लेवल वेदर प्राइस इजीली क्रॉस कर रहा है अप और डाउन या फिर स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल कर रहा है तो इमीडिएट वार्निंग सिग्नल, स्ट्रगल नहीं कर रहा है तो ये मेरे लिए स्मूथ एक्शन। यहाँ पे आराम से प्राइस फ्लक्चुएटिंग मूव कर रहा है, तो क्लीन मूव ऑन द डाउन साइड, प्राइस हमारा टारगेट तक आ चुका है। द फैक्ट हियर इज, इसका मतलब ये नहीं ना हर दिन टारगेट ट्रिगर होगा, हर दिन ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगा, दैट नॉट दैट सिनेरियो। आप पहले सिर्फ बाई बाई सेल 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 चक्कर में पड़ते रहोगे तो प्रॉफिट नहीं बनने वाला रियलिटी में। यहाँ पे क्लू पता चल गया, तो ये क्लू कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्लू ही मेक्स माय डिसीजन मोर क्लियर टू ऑन बोर्ड द ट्रेड स्ट्रेटजी, execute this trade strategy with clear clarity. That is where I am more comfortable. तो ये दिस इज अ फुल स्ट्रेच प्रोसेस, ये पूरा सेशन में ऑप्शन देखता हूँ, प्राइस क्या चल रहा है उसके हिसाब से देखता हूँ एंड देन अकॉर्डिंगली आई रिएक्ट। ओके, इफ आई कंटिन्यू दिस ना वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगा। आई ट्राई टू अपडेट यू, मतलब जो भी इंडिकेटर जो भी एक्सेस ले रहे हैं ना, यू विल बी एडेड, यू विल बी इन द पार्ट ऑफ अ फ्री चैनल, फ्री व्हाट्सएप चैनल, जहां पे आपको अपडेट मिलता रहेगा कि हाउ इट इज बीन रिएक्टेड। डेली डेली अपडेट मिलता रहेगा। फॉर दैट केस अभी मैं रिप्ले ऑफ कर रहा हूं, उसके बाद आप बाकी सेम अप्रोच के साथ देखोगे तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे भी प्राइस ऊपर गया, फेल्ड, रिजेक्ट हुआ, डाउन मूव, कहां तक टारगेट यहाँ पे नोटिस कीजिए, प्राइस आराम से कमिंग टू दिस, यहाँ पे क्लोज सही नहीं है, नॉर्मल क्लोजिंग, तो ये मेरे लिए टारगेट एग्जिट है, या फिर 1:2 या ऊपर मिल रहा है, मैं हैप्पी टू कम आउट। ओके, उसके बीच में आई एम नॉट इन अर्जेंट, आई एम नॉट इन हरी बरी टू डू एनीथिंग। Now, what is next for tomorrow's session? Tomorrow के लिए what are all the key levels I will be carry forwarding based on this indicator, based on this strategy? ये हो गया 1 2, ये डेवलपिंग है, इसमें कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगेंगे, तो 1 and 2 is the reference level. I'll tell you what is the reference level, but before that let me just check also on the downside, नीचे भी what are all the levels which is there. Probably I need to change the settings here. मैं जाके सीधा यहाँ पे historical maximum 50 days I can watch it, so I can make it to 50. Okay, इस लेवल के हिसाब से बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर कोई नीचे रेफरेंस लेवल तो बहुत दूर है, प्रॉब्ली 25,600 650 के आसपास है। बिफोर दैट वी डोंट हैव एनीथिंग। तो बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर, बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटजी, व्हाट आर ऑल द टू रेफरेंस लेवल व्हिच इज देयर, इसके अलावा व्हाट इज द रेफरेंस लेवल वी माइट गेट, ये जो भी डेवलप हो रहा है, वंस दिस स्टॉप्स उसके बाद इट बिकम्स रेफरेंस लेवल। ओके, सो एज ऑफ नाउ व्हाट इज दिस, 25,793, 25,835. These are the two reference level. So 25,835 is here. तो इसमें कौन डोमिनेट किया, आराम से बियर्स आर मोर इन डोमिनेटिंग, और शिफ्ट भी नीचे हो रहा है। एंड हियर दिस इज आल्सो लोकेशन जहां पे बियर्स आर मोर इन कंट्रोल ऑफ द एक्शन, 25,793 ये हो गया एज पर द फर्स्ट इंडिकेटर रेफरेंस लेवल। आई विल बी फोकसिंग फॉर टुमारो सेशन। एंड वन मोर पॉइंट, एक इंडिकेटर एक स्ट्रैटेजी के साथ में और एक इंडिकेटर और एक स्ट्रैटेजी को मिक्स नहीं करने वाला। एंड नेक्स्ट कमिंग टू दिस लाइव सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, यहाँ पे नोटिस कीजिए लाइव सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है। As you are watching this video, meanwhile, very important, if you are a cash trader, equity trader, swing trader, for you, it's a swing watchlist navigator, a game changer tool. You just Google swingwatchlist.com. You'll be reaching to this website. Once you can click on the start, get started for the free, create your account. And once you log in, you will be in the dashboard page. So how to get access? What are all the things you will be getting straight away in the dashboard? You can just click on the bottom left side, you could find extension. Just you can watch this tutorial to understand what is the swing watch list extension and what is the main core game changer you can find out. इस किस्म का price action चल रहा है यहाँ पे। If I want to just show you one more thing, again I just, those who are very new ना replay एक बार दिखा दूंगा तो it becomes more clear. So यहाँ पे just notice here, ये खत्म हो चुका है, दिस रेफरेंस लेवल ईयर 1 इज बीन कंप्लीटेड, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो व्हाट इज नॉट कंप्लीटेड, कोई रेफरेंस लेवल भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये डेवलप चल रहा है, ये डेवलपिंग है।
तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जैसे यू कैन जस्ट लोड प्ले इट, यू कैन सी दिस, इट इज गेटिंग लोडेड, डेवलप हो रहा है, प्राइस अप डाउन रेफरेंस लेवल चल रहा है, राइट यहाँ पे मेरा फोकस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस यही है कि व्हाट इज द अनटेस्टेड लेवल। यहाँ पे देखिए आप, ये दिस इज अनटेस्टेड 1 2 based on the current indicator, this is untested 3, these are the 3 reference level which has not been tested, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, राइट। सो आई वांट टू सी कि यहाँ पे इसके आसपास बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर am I getting anything in terms of any opportunity, या फिर मुझे क्या कुछ समझ आ रहा है। सेम निफ्टी का चार्ट है बट ईच हैज इट्स ओन वे ऑफ शोइंग द डेटा। अब नोटिस कीजिए यहाँ पे तो ऊपर ही पता चल रहा है, यहाँ पे नोटिस कीजिए दिस इज द रेफरेंस लेवल, इफ आई जस्ट वांट टू मार्क इट एंड शो, यहाँ पे जस्ट आई एम मार्किंग इट, ये देखिए क्या हो रही है, व्हाट इज द एक्टिविटी गोइंग ऑन, दिस इज अ रेफरेंस लेवल, चलो बढ़िया। प्राइस ट्राई टू वेंट अप, कुछ एक्शन नहीं हुआ, नीचे आया, पुल बैक, फिर से जब प्राइस ऊपर जा रहा है इमीडिएटली रिजेक्ट कर रहा है। तो फॉर मी एज दिस इंडिकेटर एग्जीक्यूशन बिलो दिस फ्यू पॉइंट्स अबव दिस इज माय स्टॉप लॉस। अब बात आ रही है टारगेट, व्हाट इज द टारगेट। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए ये डेवलपिंग लेवल है, ऑलवेज इंपॉर्टेंट, जब प्राइस डेवलपिंग लेवल के आसपास आ रहा है, फास्टर इट इज क्रॉसिंग डाउन, फास्टर इट इज क्रॉसिंग अप, यही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। फास्टर इट इज बीन क्रॉसिंग अप, फास्टर इट इज बीन क्रॉसिंग डाउन, इफ इट इज हैपनिंग, या फिर जैसे ही लेवल डेवलप हो रही है, प्राइस कमिंग डाउन, द लेवल गोज अप, ये जो भी डेवलपिंग लेवल ऊपर चले जाता, तो ये मोर कॉन्फिडेंस, मोर क्लैरिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पे बिलो दिस एग्जीक्यूशन स्टॉप लॉस फ्यू पॉइंट्स अबव दिस टारगेट 1:2, उससे ज्यादा मिल रहा तो आई एम हैप्पी, 1:2 इज फाइन एंड फेयर। बट उससे पहले देखना है यहाँ पे करंट डे पे यही से प्राइस फ्रॉम हियर इट वाज अ फास्ट रिजेक्शन, तो आई हैव टू क्लोजली ट्रैक, fast rejection has happened on the bulls, I am on the bearish side, whether price is easily crossing, 5 मिनट का क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस में चेक कर रहा हूं, easily crossed I will wait for 1:2 या उससे ऊपर जो कुछ भी नेक्स्ट रेफरेंस लेवल whichever is first, बट क्रॉस नहीं कर रहा है, क्लोज सही से नहीं मिल रहा है नीचे, तो इमीडिएट एग्जिट, मैं ज्यादा कुछ सोचूंगा नहीं, इमीडिएट एग्जिट या फिर उस कैंडल आई के ऊपर एग्जिट, वाइस वर्सा ऑन द ऑपोजिट साइड। यहाँ पे भी सिमिलर सिनारियो, फर्स्ट क्लू देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एज पर दिस इंडिकेटर दिस इज जोन इज शिफ्टिंग डाउन, उसके बाद ये करंट डेवलपिंग जोन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे इट इज इनसाइड द प्रीवियस जोन, प्रीवियस जोन के अंदर है, इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी इतना क्लैरिटी नहीं दे रहा है इन टर्म्स ऑफ वन साइडेड डाउन या फिर वन साइडेड अप। जब प्राइस इनसाइड द प्रीवियस, यहाँ पे जो रेफरेंस लेवल है ये स्टैटिक है, ये जो डेवलपिंग लेवल इट इज इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या है, मार्केट अभी क्लू कम दे रहा है, क्लू इतना क्लैरिटी के साथ नहीं मिल रहा है। In that case, what is the possibility? What are the possible scenario? Is always I am prepared based on the indicator. I am prepared कि market थोड़ा reversal की activity it can be more. It can happen. Possibility ज्यादा है. Point number one. And one more thing to be noted. यहाँ पे आप notice कीजिए. This is a reference level. This is right. This is also a reference level. Price came back, pull back, rejection, यहाँ पे रिजेक्शन कर रहा है, एग्जीक्यूशन बिलो दिस, स्टॉप लॉस अबव दिस, सही है, बट द फैक्ट यहाँ पे आया नेक्स्ट रेफरेंस लेवल वेरी क्लोज, मुझे यहाँ पे देख रहा हूं कि वेदर इट इज स्टेबली क्लोजिंग, ये क्लोज ही स्टेबली ऊपर नहीं दे रहा है, तो इमीडिएट मेरे लिए आई कैन नॉट होल्ड ऑन दिस ट्रेड फॉर फर्दर मोर, इफ आई जस्ट गो ऑन फर्दर एंड फर्दर, राइट। अब ये जो भी डेवलपिंग आप प्राइस देख रहे हो, दिस इज डेवलपिंग, राइट, डेवलपिंग के हिसाब से आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग, डेवलपिंग के हिसाब से आई एम वेटिंग टू सी व्हाट इज द एक्शन गोइंग ऑन, उसी के साथ जस्ट नोटिस हियर दीज आर द प्रीवियस रेफरेंस, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो प्रीवियस रेफरेंस लो क्या हो रही है, प्राइस ट्राइंग टू कम रिजेक्ट, प्रीवियसली यही से सपोर्ट लेने वाला प्राइस सेम रेफरेंस लेवल से रिजेक्ट कर रहा है, दिस इज वन मोर एग्जीक्यूशन बिलो दिस, स्टॉप लॉस अब टारगेट क्या है, यहां से फास्ट रिजेक्शन, प्राइस कमिंग ईयर, क्लोज क्लियरली मिल रहा है कि नहीं बिलो इट, दैट इज द रीजन आई नीड टू चेक, मिल रहा है तो आई विल वेट फॉर 1:2, नहीं मिल रहा है तो इमीडिएट एग्जिट, यहाँ पे नोटिस कीजिए क्लोज मिल रहा है सही से, इट इज ऑलमोस्ट हियर, नहीं मिल रहा है, फास्ट रिजेक्शन,
सो इमीडिएट एग्जिट, नॉट मच ऑफ ओवर थिंकिंग। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्केट मॉर्निंग इट वाज ट्राइंग टू मूव अप, यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिला बट क्लोज सही नहीं था, रिस्क टू रिवॉर्ड भी इतना खास नहीं मिला। यहाँ पे दिस वाज रिवर्सल मार्केट। अब ये रिवर्सल होने की चांसेस कैसे पता चल रहा था मुझे, दिस इज द प्रीवियस डेवलप्ड, ये पहले डेवलप हो चुका है डेवलप्ड जोन, दिस इज डेवलपिंग इज इनसाइड द प्रीवियस डेवलप्ड जोन, इसका मतलब प्राइस इनसाइड है, तो मार्केट अग्रेसिवली आप फिलहाल के लिए इट इज नॉट इंटरेस्टेड, आर इतना बोल सकते इट इज नॉट मोर रेडी, फास्टर टाइम ले सकता है। तो ये मेरे लिए आई हैव अंडरस्टैंड ऑन प्री मार्केट, मतलब मार्केट जैसे ही व्हेन इट इज ओपनिंग ट्राइंग टू रिएक्ट, आई हैव दैट बेसिक क्लू। उसके बाद हायर लेवल से बियर्स dominating से अच्छा I can tell bulls struggle, that is where the core opportunity comes in. So from this, if I want to see what is the next reference level, what are the key reference level I need to carry forward for the upcoming session, तो ये untested 1, 2 and 3 on the upside, ये भी developing is there but on the 4, this is the untested, these are the 4 untested level I have to look carry forward. My focus is to first see what is the market doing, मार्केट पहले क्या कर रहा है, उससे नीचे देखिए फ्री फ्लोइंग है, यहाँ पे कोई ज्यादा कुछ रेफरेंस लेवल नॉट देयर बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर आल्सो, तो बेसिकली फ्री फ्लोइंग लोकेशन है नीचे ऑन टुवर्ड्स डाउन साइड, so this is where the core reference level, so based on this what are the reference level is there, 25,880, 25,836, 25,815 and 25,739, these are the current 4 developed reference level. I repeat, 25,880, 25,836, 25,815, 25,738. This is where I'll be focusing. Now, next, SRL Pro. That is adaptive support and resistance. अब इसके साथ भी देखेंगे, यहाँ पे भी मार्केट is giving us the opportunity. अब यहाँ पे opportunity notice कीजिए, this is something different. यहाँ पे प्राइस ये रेफरेंस लेवल था, इमीडिएट रिजेक्ट कर रहा था, I am not in an urgent to go and take immediate rejection, but the fact here is it is showing ये क्या है, those who are very new, this is called as trap. ट्रैप का मतलब क्या है, इफ ग्रीन कलर ट्रैप लाइक दिस इज कमिंग, इसका मतलब द बियर्स आर माइट गेट ट्रैप, मतलब ये ग्रीन होगा तो बियर्स माइट गेट ट्रैप, if it is on the upside ऊपर, when it is moving up, price is moving up, if I'm getting this trap, that इसका मतलब these bulls might get trapped. Now the question, sir, यहाँ पे भी green candle था, first thing I told you, right, the green triangular bar comes, price already it is moving down, when it is coming with a green candle, then I am focusing, यहाँ पे green color formation आ रहा है, but price is rising up, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो बियर्स कैसे ट्रैप होंगे, right, you have to understand the core concept, price coming down, green color triangle coming in with a bullish candle, इसका मतलब है these bears can get trapped. Similarly, price जब ऊपर जा रहा है, in this location if I am getting what, bears trap with a bearish candle, इसका मतलब क्या है कि these bulls might get trapped. तो ये इंडिकेटर इज ऑल्सो गिविंग एन हिंट, अभी यहाँ पे दैट इज वन मोर एडवांटेज, इफ आई लुक एट दिस रेफरेंस लेवल, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, पुल बैक, रिजेक्शन, एग्जीक्यूशन अबव दिस, स्टॉप लॉस बिलो दिस, यहाँ तक प्राइस गया, दैट्स इट, आई एम हैप्पी टू कम आउट फ्रॉम माय एंट्री 1:1 या फिर 1:0.9, उससे ऊपर रिस्क रिवॉर्ड आई नीड टू लुक फॉरवर्ड, ताकि माई पोजिशन इज नॉट बीन ओवर फ्लक्चुएटिंग, राइट। उसके बाद यहाँ पे नोटिस कीजिए प्राइस ट्राइंग टू कम डाउन, पुल बैक, रिजेक्शन, इसके नीचे एग्जीक्यूशन, बट यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड्स, अपॉर्चुनिटी कमिंग इन एज पर द स्ट्रेटजी, बिकॉज रेफरेंस लेवल इज वेरी ट्राई, फ्रॉम माय एंट्री टिल 1:1 तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आई एम मोर कंफर्टेबली हैप्पी। यहाँ पे नोटिस कीजिए प्राइस ट्राइंग टू गो डाउन, पुल बैक, फिर से रिजेक्शन, एग्जीक्यूशन बिलो दिस, स्टॉप लॉस अबव दिस, प्राइस इजीली क्रॉस कर रहा है, व्हेन इट इज अप्रोचिंग रेफरेंस लेवल आई विल वेट फॉर द क्लोज, क्लोज ऊपर हो नीचे हो, नीचे हो रहा तो एडिशनल एडवांटेज इन डाउन साइड, नॉर्मली हो रहा है तो एग्जिट इमीडिएटली, ओके। सेम एक्टिविटी, प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है, अगेन ट्राइंग टू रिजेक्ट, फिर से रिजेक्शन, फिर से डाउन मूव, सो मार्केट स्लोली स्टेडीली इंटेंशन, यहाँ पे जब प्रीवियसली बुल्स डोमिनेट कर रहे थे, बियर्स टेक ओवर कर रहे हैं,
यहाँ पे previously bulls were trying to take control, यहाँ पे bears are coming in to dominate. So all these core reference level, which is giving us a lot of activity, lot of information, that is where it is that additional clue which we are getting it for the next trading session. I am prepared. So these are the three different strategies based on three different indicators. Each gives different and unique reference level. That is the reason I told I follow each indicator as a each strategy separate. कोई किसी पे I am not mixing it anywhere at any point of time. It can be Nifty or it can be Bank Nifty. Right? Now each reference level is giving different approach. Now the question, sir, which indicator to follow? I am personally following all the three. So how I can tell which is best, which is not best? Each has its own advantage. अब the core factor is first आपको clue पता होना चाहिए कि मार्केट एंट्री ढूंढने से पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट जैसे ओपन हुआ, प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, प्राइस कमिंग डाउन रिजेक्ट कर रहा है. इसका मतलब क्या? प्राइस रिजेक्टिंग is the int key. Bull's intention is more good or more stronger action in showing that they are intentionally ready to move the price up. तो ये फर्स्ट क्लू है. उसके बाद यहाँ पे बुलिश अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है, तो ये क्लू के साथ आई एम गोइंग इन एन अपॉर्चुनिटी, आई एम इन. क्लू नहीं है, रैंडमली प्राइस सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, I will think twice and then I will react. Depends, each has its own aspect. मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पहले क्लू. पहले क्लू का मतलब मार्केट मुझे पहले I have to understand the market. Then only I will react according to the market. Right? So in this entire video, I have told you कि three different indicator, three different strategy के साथ market, how it is reacting, market की देखने की perspective, how you have to change, and then based on all the three indicator, what are all the reference which is there, which is important for me on the next trading session. Methodology rule is same for Nifty, Bank Nifty, stocks, whatever I am following, same. Intraday है 5 minute, 15 minute. Positionally 30 minutes hourly. And for swing daily, hourly. These are the time frame which I follow. So simple and straightforward. By this time, you would have already messaged me on the WhatsApp for the indicator access. If you had thought to watch the video fully and then message up, you can message me on the WhatsApp straight away. To get link, WhatsApp link to message me is in the description to get all the three indicators access immediately. Fine and fair. Thank you.